ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಗುಟ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಶೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 100 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಶೆ ಇನ್ ದಟ್, if you see that some small drug is added, I will see that I will try to ban this in Karnataka. So you should be very cautious. कर्नाटक के वजीर आला डीके शिव कुमार ने खबरदार किया है कि अगर पान मसाला, गुटखा और इसी नौयत की दीगर चबाने वाली तंबाकू मसनूआत में नशा आवर अज्जा पाए गए तो रियासत में उनकी फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की 31वें यौम तासीस तकरीब में कंटेरवा स्टेडियम में मुनक़िद नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए की आमदनी भी कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने मसनूआत तैयार करने वाली कंपनीज़ को खबरदार किया कि उनकी मसनूआत में कोई नशा आवर मादा शामिल न हो। वज़ीर आला ने कहा कि मंशियात की लत माशरे के सामने उभरने वाले सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पहले ही कई इक़दाम शुरू कर चुकी है और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि मकसद मंशियात से पाक कर्नाटक की तामीर और नौजवान नस्ल के मुस्तक़बल का तहफ़्फ़ुज़ है। तकरीब में शरीक नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए मजबूत क़ुव्वत इरादी ज़रूरी है। गवर्नर तावरचंद गहलोत ने मंशियात के इस्तेमाल को माशरे के लिए संगीन खतरा करार दिया। RGUHS से वाबस्ता कॉलेजों के 25,000 से ज़ायद तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मंशियात से पाक भारत के सफ़ीर बनने का अहद किया। I am very happy that you are holding Nasha Mukta Bharata Conclave and you all are the ambassadors of it. So drug menace is only the major challenge we are facing today. Today, let us all join together. It is a shame that more of the youth are falling to this trap. You are the ambassador. You have to stop it. You have to guide them. It is your responsibility. You have taken this as a great profession. In this profession, we should see that nothing comes to India and we have to protect it. Today, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಗುಟ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಶೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 100 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಶೆ ಇನ್ ದಟ್, if you see that some small drug is added, I will see that I will try to ban this in Karnataka. So you should be very cautious. I am giving a warning to all. Our goal is to create a drug-free Karnataka in our state. We are doing a lot of work in that. My minister, he has taken a big leap in it. Today, I am very proud. Our Vice President of India, today morning also, I just started this on behalf of the government, this Pulse Polio program. We are very happy in this country. Our Vice President started this great event. I would like to thank it. Enforcement in home is very much essential. That means in your colleges, in your environment, you have to create this. So we should see that we will protect our country. I don't like to speak much. We have a lot of time. Our leaders are there. Drugs menace in this country is like a tap of a bucket. So ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಂದಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಐ ವುಡ್ once again congratulate the Rajiv Gandhi Health University, the Vice Chairman and all the Vice Chairmen earlier who have worked in this department. A great future. You have laid a very good foundation. We would like to continue. On behalf of Government of Karnataka, I would like to tell my entire government support stand committed with you to save Karnataka and save Karni. Jai Hind, Jai Karnataka, Jai Nashamukta Bharata. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ?
जय हिंद।